हाय गाइस, वेलकम टू द सॉल्यूशंस। माय नेम इज सौरभ गावड़े। सो अब हम बढ़ते हैं इन्वॉल्यूट के स्पेशल केस की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, अ सेमी सर्कल विथ ओ एज अ सेंटर एंड 60 mm डायमीटर इज फिक्स्ड एज शोन इन द फिगर। सो फिगर आप देख सकते हैं बाजू में। सो पी क्यू इज एन इनइलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ 130 mm लेंथ। सो पी क्यू एक स्ट्रिंग है इनइलास्टिक जो जिसकी लेंथ है 130 mm। सो एंड क्यू, जो स्ट्रिंग का एंड पॉइंट क्यू है, वो सेंटर ओ से 20 mm अबाव और 20 mm राइट साइड है, आप फिगर में देख सकते हैं। सो द स्ट्रिंग इज वाउंड अराउंड द सेमी सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट पी। सो हमें ये स्ट्रिंग सेमी सर्कल पे वाउंड करनी है और जो पी पॉइंट है उसका हमें लोकस ट्रेस करना है। सो इसे हम एक्चुअल में कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप हमारे आगे के वीडियो देखिए। जैसे कि हमें दिया हुआ है जो सेमी सर्कल है वो 80 mm डायमीटर का है। सो हम 80 mm डायमीटर का लाइन मारेंगे। लेस देन एट 0 डिग्री हमें लाइन मिली है, देख सकते हैं। सो अब हम जो है सेमी सर्कल बनाएंगे, तो नीचे का पार्ट जो है वो ट्रिम कर देंगे। सो अब इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, इसे हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पोलर एरे यूज करके 6 सॉरी, ये गलती ये हुआ कि मैंने 360 डिग्री एंगल कवर करने को बोला, तो उन्हें 360 को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कर दिया। सो हम 180 डिग्री एंगल बोलेंगे क्योंकि सेमी सर्कल जो है वो 180 डिग्री ले रहता है। सो 180 डिग्री को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम 180 डालेंगे। सो ओके, सो आप देख सकते हैं ये डिवाइड हो चुका है। सो अब हम सिमिलरली जैसे हमने सर्कल का इन्वॉल्यूट बनाया था, सो सिमिलरली हम इसे भी टेंजेंट्स बना देंगे। आप देख सकते हैं सिमिलरली हम इसे भी टेंजेंट्स बना देंगे। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन हम बनाएंगे। 120 mm का जो हमारा स्ट्रेट लाइन है जो इस पर रोल हो रहा है, सो उसके दोनों पॉइंट्स को हमें ट्रेस करना है। सो इस लाइन को अब हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
बी पॉइंट इसको नाम देंगे, हम बी पॉइंट नाम दे देंगे। अब दूसरे पॉइंट का लोकस भी हम बनाएंगे। सो ये पॉइंट हमें मिल गया है। सो अब हम इसे एक प्रोजेक्शन लाइन से ज्वाइन करेंगे। सेमी सर्कल का सेंटर है इस पॉइंट से। सो यहाँ से जो है हम स्ट्रेट एक लाइन बनाएंगे।